What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to another gameplay video of Hogwarts Legacy. So Hogwarts Legacy के पार्ट 1 में हमने यहाँ पे जो था प्रीलॉग हमने कुछ देखा था, प्रोलॉग सॉरी फॉर डैट। सो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लगा है। यहाँ पे रैग्नॉक के बारे में, गॉब्लिन्स के बारे में, काफ़ी मल्टीपल चीज़ों के बारे में यहाँ पे पता लगा है। एंड हमें एक चीज़ के बारे में और पता लग चुका है यहाँ पे कि जो हेडमास्टर है फिर हॉगवर्ट्स के जो लोग हैं उनको वो नहीं मानते कि गॉब्लिन्स जैसी भी कोई चीज़ जो है एग्जिस्ट करती है, स्पेशली जो उनका हेडमास्टर है वो तो। एंड आज के इस वाले एपिसोड में हमने यहाँ पे जो था रेवन क्लब को ज्वाइन कर लिया था, तो उसी रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जो है आज के सारे एपिसोड में हमें यहाँ पे करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, सो लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ पे अपना जो कॉमन रूम था हमने इसमें आके एंटर करा था। रेवनक्लॉ का एक कॉमन रूम है। एंड आज के इस वाले एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में और पता लगने वाला है। एंड स्टोरी तो काफ़ी बड़ी है यहाँ पे हॉगवर्ट्स लेगेसी की, जितनी अभी तक मैंने यहाँ पे खेली। एंड ग्राफिक्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को जो पहली बार हमारा एपिसोड देखे, मैं अल्ट्रा यहाँ पे प्रीसेट पे खेल रहा हूँ। एंड जितने लोगों को सेटिंग मेरी चेक करनी है तो आप लोग जो है प्रीवियस एपिसोड को चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे ग्राफिक्स अपने दिखाए थे। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अमित एंड इसके अलावा समांथा एंड एडवर्ड्स। ठीक है, तो इन तीनों को हमें इंट्रोड्यूस करना है। ये है एडवर्ड। सो पहले एडवर्ड से यहाँ पे हम बात करते हैं। One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. And I actually tend to I'm glad to be here. Let's go with the first Ready for option only. classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. चलिए, यहाँ पे एडवर्ड से हमने बात कर लिया। इसके अलावा अमित एंड समांथा से भी यहाँ पे बात करते हैं। एंड मेरे ख्याल से ये जो है समांथा है। I want him to be in the perfect place, a place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. And Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. and nice talking. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. बट यहाँ पे ना एक चीज और आ रहा है एग्जाम में। ओके, सो यहाँ पे हम जो ये एप्पल्स थे इनको हम खा सकते थे। That's just brilliant, Army. यहाँ पे अमित कुछ तो बाहर देख रहा है। एंड इसका नाम अमित ठक्कर, तो ये एक इंडियन है। एंड इसके जो कॉम्प्लेक्शन है उससे भी काफी ज्यादा ये क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये एक इंडियन ही है। Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit.
I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Hey there. Okay, चलो ठीक है, अभी हमें मीट करना है प्रोफेसर वेस्ली से। You best not keep her waiting. I wonder how many secret passages तो Hogwarts यहाँ पे काफी सारी चीजों और इंटरेक्ट कर सकते हैं। Can't imagine starting a new school this. ओके, सो ये एक ऊपर वाला रूम था, हमें इसके जो है नीचे वाले रूम में जाना है। Good morning. प्रोफेसर I trust वेस्ली। you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? ये क्या चीज़ है? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. क्या ये सब कुछ हमें स्टडी करना है क्या? तुम्हें सारे स्पेल्स, मैजिक्स? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, इस बुक के Professor. अंदर हम यहाँ But पे सब कुछ जो what है do you mean उसको it रीड will कर keep सकते हैं, सारे track सारे of what I'm स्पेल्स learning? जो हैं जो हमें आने चाहिए Perhaps एंड जो seeing स्पेल it हम in अनलॉक कर सकते हैं या action फिर will अपनी जो answer any एबिलिटीज questions हमको you may have. अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो Walk with सारे me के and सारे we जो shall put it to एलिमेंट्स the हैं test. उसको हम इस बुक के थ्रू यहाँ पे जो है लेवल अप कर पाएंगे या फिर हम चेक कर पाएंगे। This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding The lore. Ashwinders running Okay. about. Any news about the dragon near Pitterpond Ford? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. वेट, ओके, सो ऊपर की साइड हमें जो है रिविलियो का यूज करना है। ओके, सो ऐसे से हमें करके जो फील्ड गाइड के पेजेस हैं उनको हमें कलेक्ट करना है। जो पेजेस आप लोगों को याद होगा फील्ड गाइड मिलने से पहले हमारे सामने से उड़ के गए थे, तो ये उन्हीं सब के लिए। वेट, फील्ड गाइड को मैं ओके ठीक है ओपन ऐसे करना है। मैं यहाँ पे देखो कि लेवल 1 हमारा फील्ड गाइड का है एंड ये वाला हमारे कुछ चैलेंजेस हैं। इसके अलावा कलेक्शंस हैं। फील्ड गाइड को वैसे ओपन कर लेते पहले तो। एंड फील्ड गाइड के जो पेजेस है सिर्फ 1% पेज हमने ऐसे कलेक्ट करा है एंड इसको हमें 100% कंप्लीट करना है। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे और है, एक्सप्लोरेशन, क्वेस्ट, कॉम्बैक्ट, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, कलेक्ट, ओके, इसको हमें कलेक्ट कर लेना है। बी टू एग्जिट द फील्ड गाइड। ठीक है, चलिए इसको एग्जिट कर लेते हैं। एक एक करके हमें सारे के सारे जो पेजेस हैं उनको कलेक्ट करना है। एंड एक नीचे की साइड में मेरे को रेवेलो यूज करने के बाद मिला था Keep your ऑप्शन। eyes open. एंड यहाँ पे जो स्किल्स है इन स्किल्स को हम यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। एंड काफ़ी सारी स्किल्स है, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करो सो जो स्किल्स है वो काफ़ी सारी यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स हमें देखने को मिल रही है।
मेरे को ऐसा लगा था कि हमारे पास जो स्किल्स होगी सिर्फ 4 ही स्किल होगी, क्योंकि हमारे स्लॉट में मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 ही स्लॉट देखने को मिल रहे हैं। बट काफ़ी सारी स्किल्स हैं ना, हम इनको जो है बीच में चेंज भी कर सकते हैं। सो एक कुछ मार्क मेरे को बाहर की साइड देखने को मिल रहा है। यू आर ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से जो है नहीं कर सकता हूँ। मेरे को अभी यहाँ पे जो है प्रोफेसर वीजली को ही फॉलो करना पड़ेगा। Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field so यहाँ guide पे जो contains है a map of the flue castle. flame. Open it up and find Central Hall. ये सेंट्रल हॉल, वेट, अब यहाँ से कैसे मैं सेंट्रल सेलेक्ट द ग्रैंड, ठीक है। इसके अलावा मेरे को द ग्रेट सेंट्रल के शायद से यहाँ डायरेक्ट मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ ना सेंट्रल हॉल को। ये स्टेयर केसेस हो गए एंड ओके, तो यहाँ पे हमें स्टेयर केस ही सेलेक्ट करना है अभी फिलहाल के लिए। एंड स्टेयर केस के अंदर इन दिस व्यू यू कैन सी द 4 फ्लेम अवेलेबल इन द रीजन। ग्रीन फ्लोर will represent flame you have discovered include your own house common room। ओके, तो एक तरीके का टेलीपोर्टेशन है। एंड जो ग्रे वाला है तो अभी अनएक्सप्लोर्ड वाला है, तो उसको हम जो है जल्दी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। एंड ये हमारा लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को हमने एक्सेस ही नहीं करा बिल्कुल भी। हैज़ अनलॉक द सेंट्रल हॉल फ्लेम फॉर यू। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये एक तरीके का जो है फास्ट ट्रैवल का ऑप्शन है ये ब्लू फ्लेम्स का यूज़ करते हुए। एंड कुछ हिंट्स आ रही, तो हिंट्स आप लोग रीड कर लेना, नीचे आपको देखने को मिल रही होगी हिंट्स। Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. ठीक है, तो इन स्टेयर्स हम डायरेक्टली जो है नीचे सेंट्रल हॉल में पहुंच जाएंगे। Quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. तो यहाँ से हम ना कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil. Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned.
And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे जो है ना 2 क्लासेस को पहले अटेंड करना होगा, बट प्रोफेसर फिग भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट उन्हें बात करनी होगी गॉब्लिन्स के बारे में। सो चलो देखते हैं। It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. So यहाँ पे कुछ तो enchantment की यहाँ पे बात करी गई है. So let's open the map. Alright, so यहाँ पे a field guide map shows Professor Hagrid class. Okay, so यहाँ पे जो classes है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. एंड यहाँ पे ये 2 क्लासेस है, एक ये चार्म क्लास एंड चार्म के साथ डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट क्लास. सो पहले हम डार्क आर्ट क्लास में चलते हैं. इसको ट्रैक पे मैंने लगा दिया है. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, so Hogwarts काफी बड़ा है, तो यहाँ पे जो है मार्क लग चुका है एंड वे हमें दिखाएगा यहाँ पे ये ट्रैवल गाइड. सो उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो है रास्ता अपना चेक आउट कर लेंगे कि हमें जाना किस तरीके से है. एंड गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना. स्टोरी तो गाइस काफी बढ़िया, अगर नई बार मानो तो आप लोग. एंड हॉगवर्ट्स लेगेसी जो है काफी बढ़िया गेम है, काफी वेल डेवलप्ड गेम है मैं कहूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे जो है बग्स या ग्लिचेस देखने को नहीं मिल रहे हैं गेम के अंदर. जैसे कि जो मुझे यहाँ पे एटॉमिक हार्ट रिटर्नल्स दोनों गेम अभी हॉगवर्ट्स लेगेसी के साथ ही लॉन्च हुई है, बट हाँ उसमें भी काफ़ी सारे ग्लिचेस जो है देखने को मिल रहे हैं. सो ग्लिचेस यहाँ पे हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं. कास्ट चार्म्ड कंपास. सो व्हाट इज दिस? द चार्म कंपास विल लीड यू टू एनीथिंग यू आर ट्रैकिंग. बट मैं यहाँ से ओके. सो चार्म कंपास, ये जो आपको लाइंस देखने को मिल रही है, सो ये है वो कि अगर मैं यहाँ पे मिनी मैप ना भी देखूँ तो मैं इसकी मदद से जो है यहाँ पे आगे जा सकता हूँ. चलिए थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट मूव करते हैं एंड अपनी जो क्लास है उस क्लास को जो है अटेंड करते हैं यहाँ पे. एंड आई गेस ये तो हमने ऑलरेडी जो था प्रोफेसर फिग ने हमें डिफेंस जो है वो सिखा दिया है. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprise So, हम यहाँ पे जो है Levioso spell सीखने के लिए आए हैं. Master Pruitt, no? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ठीक है, तो पहले मेरे को जो है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस बार.
क्योंकि मेरे को स्पीड जो है काफ़ी फास्ट रखनी पड़ेगी क्योंकि पीछे से वहाँ पे आ चुका है। चलो यहाँ पे डिस्टेंस है तो लेवियोसो काफ़ी क्लोज था ये, बट हाँ यहाँ पे लेवियोसो जो स्पेल है वो मैंने सीख लिया है। Now, let's try something a little larger. एंड मेरे ख्याल से इस चीज़ पे हमेशा नहीं, सब ने यहाँ पे जो है लेवियोसो को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ कर लिया है। Let us begin with a basic cast. Perform a basic cast using right trigger. See how the dummy deflected your cast? Okay. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak. Good. Now, the basic cast. Well done. Okay, so यहाँ पे मैं समझ गया कि लेवियोसो को हमें किस तरीके से जो है कास्ट करना है। Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. Levioso. ओके, तो यहाँ पे चार्ज नहीं था, मैंने ये चीज़ को नोटिस नहीं करा। Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. This can't be your first duel. Protego. Precious Sam. I do need to my lively Duels. If only all of my students were this adept. Try to anticipate your opponent's next move. Levioso. Want your opponent assigned to attack or defend? So यहाँ पे सेबेस्टियन को तो काफ़ी इजीली जो है मैंने डिफीट कर दिया। Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. चलिए सेबेस्टियन का बात करते हैं यहाँ पे। Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested.
सो अगर हमें इसको जो है ज्वाइन करना है इस क्लब को, सो यहाँ पे हमारे मैप में जो है मार्क आ चुका होगा। एंड अगला जो है हमें यहाँ पे चार्म क्लास में जाना है। सो चलते हैं जल्दी से चार्म क्लास को भी जाके जो है अटेंड करते हैं, देखते हैं चार्म क्लासेस में हम इस बार क्या सीखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लेवियोसो अटैक था, स्पेल मैं बार बार अटैक बोल रहा हूँ, बट स्पेल जो था काफ़ी पावरफुल स्पेल था। क्या मैं इन पे जो लेवियोसो यूज़ कर सकता हूँ क्या? ओके, सो ये स्टैचूज़ है तो स्टैचूज़ पे लेवियोसो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। If I could undo all that happened that day, I would. What is this going on? कुछ टाइप के यहाँ पे जो घोस्ट थे वो लोग यहाँ पे फ्लोट करते हुए जा रहे थे। सो इधर है हमारी जो है चार्म की क्लास। सो लेट्स अटेंड द चार्म क्लास ऑल्सो। Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? So, Professor Ronan. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ओके, सो यहाँ पे तीन मेरे ख्याल से जब उस पर हम पहुँचेंगे शायद हमें ना 1 प्रेस करना है बूस्ट के लिए। एंड येस, सो मैं ये चीज़ पहले नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं उस पर A प्रेस करता हूँ एग्जैक्ट सेम टाइमिंग पे, काफ़ी करेक्ट टाइम होना चाहिए, तो उसको हम जो है यहाँ पे फिर बूस्ट कर सकते हैं स्पीड को। You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. So, यहाँ पे जो क्लास है वो आउटडोर क्लास होने वाली है अब। I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? एंड यहाँ पे प्रोफेसर रोनेन ने ओके, तो हमें यहाँ पे शायद से इन बॉल्स को शायद पुल करना होगा। So why don't we have our newest student start us off? Okay, so हमें इसको यूज कैसे करना है? ठीक है। On one of the spheres and relinquish your charm. Very good. Don't lose. Now think of this like gobstones. Excellent control there.
Splendid! Stay focused. तो मैंने 2 बॉल्स को कंप्लीट यहाँ पे पुल कर दिया, बट हाँ एक बॉल यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो पुल नहीं हो पाई, शायद उसकी वजह से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है जो माइनस Would होंगे। you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You be Okay. the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. What's this? ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हमें वो मिलेंगे चांसेस इसको यूज करने के, सो लेट्स गो विद दैट। Happens to the best of us. कि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हमें बॉल्स को जो है ना इसको ऊपर तक ही रखना है, हमें इसको पूरा कंप्लीट जो है पुल नहीं कर रहा था। ये थोड़ी सी गलती हुई मेरे से, मुझे ऐसा लगा था कि हमें शायद बॉल को जो है कंप्लीट खींचना होगा। एंड देयर वी गो विद 30 पॉइंट्स, नॉट बैड। Let us see this. सो मेरे ख्याल से एक और 30 पॉइंट्स नहीं, 50 पॉइंट्स। एंड उसके 130 पॉइंट्स है नत्शा के, एंड हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 30 पॉइंट्स है। मतलब पूरा पुल ना हो जाए। ओके, सो देयर वी गो। मैं पे डायरेक्टली जो था 50-50 कर सकता अगर मैं इसको वापस से अगर स्टार्ट कर पाऊँ। यस, क्या मैं इसको वापस से चैलेंज कर सकता हूँ क्या? Let us make this a bit more interesting, shall we? शायद से यहाँ पे वापस से हमारा जो है एक और यहाँ पे कुछ तो बैटल होगी। I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. What's this? ये वैसे काफी अच्छी है, इसको बॉल को जिस तरीके से पुल करना है ना उसमें काफी अच्छी तरीके से बॉल को पुल कर रही है। ओके, मैं इसको अब पुल करूंगा। क्या स्पीड ज्यादा तेज थी? नो 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 नो। ओके 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 ओके, यस। सो एट द वेरी लास्ट पॉइंट यहाँ पे जाके एकदम आया, अदरवाइज अभी नीचे गिरी गई थी बॉल। Really not bad. That is how it's done. So now it's my turn. Let's pull it off. And there we go. Another 50. क्योंकि अब मेरे को पता लग चुका है कि यहाँ पे किस तरीके से करना है। लास्ट वाले में मुझे आइडिया नहीं था। Here we go. So another 30. So अगर मैं यहाँ पे 30 पॉइंट्स भी अब स्कोर करता हूँ तो मैं इसको विन कर जाऊंगा अब। एंड देयर वी गो। मैंने काफ़ी इजीली जो 30 कर लिया, क्योंकि एक ना बॉल थी तो जिसकी वजह से 50 के लिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती मेरे को इस एंगल से। सो यहाँ पे मैं जो है विन कर चुका हूँ। पहला राउंड यहाँ पे मैं हार गया था, बट हाँ दूसरा राउंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे विन कर चुका हूँ। Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you.
तो चलो And गाइस, with you. उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को कि I आपको ये think एपिसोड भी Professor अच्छा Vernon लगा। wants to एंड अगर talk आप to लोगों को you. एपिसोड अच्छे लगे तो Better वीडियो को not लाइक keep करना him मत waiting. भूलना एंड साथ में चैनल Until सब्सक्राइब next करके time. नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। एंड मिलते हैं आप लोगों से हम इसके Of course, थर्ड you एपिसोड can में। use तो accurate तब तक के लिए बाय बाय एंड If हैव अ you're गुड डे so गाइस। inclined.